श्री तुळजाभवानी कवचम अथवा तुळजा कवचम. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री शंकराय नमः. अथ ध्यानम्. श्यामां पूर्णेन्दुवदनां श्वेतांबरधरां शिवां महामेघनिनादातां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्ता बाणां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदाभयधारिणीम्. अथ तुळजा कवचम्. श्रीदेव्युवाच. देवेश परमेशान भक्तानुग्रहकारक तुळजा कवचं वक्ष्ये मम प्रीत्या महेश्वरः. श्री ईश्वरोवाच. शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यतरं महत् तुळजा कवचं वक्ष्ये न देयं कस्यचित् कदा. ॐ अस्य श्री तुळजाकवचमालामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः श्री तुळजादेवता अनुष्टुप्छन्दः श्री तुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. श्रीशङ्कर उवाच. तुळजा मे शिरः पातु भाले तु परमेश्वरी नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा नाभिं कुण्डलिनी पातु जानुनी जाह्नवी तथा पादयोः पापनाशीञ्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत् इन्द्रायणी पातु पूर्वे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी पश्चिमे वारुणी पातु वायव्यां वायुरूपिणी उदिच्या पाशहस्ता च ईशान्ये ईश्वरी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेद् धास्याद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी. इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यं प्राप्नुयात्. यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्. दद्यात् कवचमीयुक्तं तत्पुण्यं शृणु पार्वती. अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः. अष्टम्या चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं वने रणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी. भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां. किमत्र बहुनोक्तेन देवी सायुज्यं प्राप्नुयात्. इति श्रीस्कन्दपुराणे सह्याद्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वतीसंवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्. श्री उमारामेश्वरार्पणमस्तु.